हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो आज आम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िया जाऊे फॉर ओपीएससी एग्जाम एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग ओडिशा हिस्ट्री आल्सो। सो उत्कलमणि गोपबंधु दास, so he is a very prominent figure in the modern Odisha history and in the the independence movement in Odisha as well as in India. So तांको विषय में डिटेल से पढ़िया आज। So Utkalamani Gopabandhu Das, the jewel of Odisha. So as all of you know, Odisha was called Utkal at that time earlier. Okay, तो उत्कलमणि गोपबंधु दास 1877 जन्म ग्रहण करथिले 1928 पर्यंत तांकर से एई ओडिशा धरित्री रे थिले से 1920 तांकर से शरीर त्याग करथिले। तांकर बहुत फेमस सॉन्ग यू मस्ट हैव हर्ड लाइक मिसु मर देह एदस माटी रे देशवासी चली जानतु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ हैला। तो एंड समाज द समाज न्यूज पेपर जे भी जोडा एबे भी ओडिसा रे बहुत फेमस। सो से तार भी से फाउंडर थिले इन 1919। सो जस्ट रिसेंटली 100 वर्ष यार पूर्ण होइछ। ओके, नाउ Gopabandhu Das, popularly known as Utkalamani, jewel of Utkal or Odisha. So he was a social worker, reformer, political activist, journalist, poet and essayist. तांकर से जन्म केबे हितला 9th October 1877। तो 1877 मसिया 9th October रे से जन्म ग्रहण करथिले। को जगह रे सुआंडो नामक गोटे विलेज रे गोटे ग्राम रे ओडसेडा अछि नियर साक्षी गोपाल पुलिस स्टेशन। जेतल तुमे भुवनेश्वर टू पुरी जाओ रास्ता रे आसे साक्षी गोपाल सेठी गोटे फेमस टेंपल भी अछि साक्षी गोपाल टेंपल। तो साक्षी गोपाल पुलिस स्टेशन पाखापाखी गोटे विलेज अछि सुआंडो विलेज जोटा कि पुरी डिस्ट्रिक्ट से जाउछि। तो सेठी से जन्म ग्रहण करले केबे 1877 रे डेट टू बी एक्जेक्टली 9th October। पिताजी को नाम थिला तांकर कोन दैत्यरी दास एंड माता को नाम थिला स्वर्णमयी देवी। ही वाज कॉल्ड ताको उत्कलमणि टाइटल के दिथिले। सो इट वाज गिवन बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आचार्य पीसी रॉय और प्रफुल्ल चंद्र रॉय फॉर हिज एंडरिंग वर्क इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न ओडिशा। तो तांकर जो मॉडर्न ओडिशा रो मेकिंग पई तांकर जहा कार्य थिला तो सही दृष्टिकोण देखि कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय तांको ए उत्कलमणि टाइटल को देथिले। ओके ना के पीसी रॉय के तांको विषय पढतो। प्रफुल्ल चंद्र रॉय वाज एन एमिनेंट बेंगोली केमिस्ट, educationist, historian, industrialist and philanthropist. He established the first modern Indian research school in chemistry post classical age and is regarded as the father of chemical science in India. अगर पचरा जो फादर ऑफ केमिकल साइंस इंडिया कहा कहा जाए ही इज प्रफुल्ल चंद्र रॉय और रे। तो से गोटे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री तांको कोन करथला ऑनर करथला तांको माने अवार्ड किसे देथला फॉर हिज लाइफ एंड वर्क विद द फर्स्ट एवर केमिकल लैंडमार्क प्लेक आउटसाइड यूरोप। यूरोप बाहर प्रथम थर भाई कहा को से ऑनर करथिला तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री दैट इज पीसी रॉय। He was the founder of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals. Maybe eta achi Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, that is the India's first pharmaceutical company. So India's first pharmaceutical company, that is Bengal Chemicals and Pharmaceuticals. So founder le kiye PC Roy और तांको भी कहा जाए कौन फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया। तांको गोटे बहुत फेमस बुक अछि दैट इज द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द मिडिल ऑफ 16th century. ओके 1902 एटा से पब्लिश करथि। ओके सो प्रफुल्ल चंद्र रॉय जे कि उत्कलमणि टाइटल देले कहा को गोपबंधु दास को। गोपबंधु दास विषय में जानले 1877 में जन्म ग्रहण करथले स्वांडो विलेज नियर साक्षी गोपाल पुलिस स्टेशन पुरी। बापा का नाम दैत्यरी दास, मां का नाम स्वर्णमयी देवी। हम एजुकेशन विषय देखियो। सो इनिशियली से गार जो पाठशाला थिले जेमति समस्त पढंती आगु पढुतले पाठशाला तांको एजुकेशन स्टार्ट करले। देन ही वेंट टू पुरी जिला स्कूल। तो पुरी रे गोटे जिला स्कूल थिला एंड ही केम इन क्लोज कांटेक्ट विथ मुक्तियार रामचंद्र दास हला। मुक्तियार कोन मुख्य अख्तियार मींस मुक्तियार मुख्य माने हेड ऑफ द अख्तियार माने लाइक एग्जीक्यूटिव हेड यू कैन से काइंड ऑफ। तो हेड ऑफ द विलेज को पढ़ाता कहला मुक्तियार। एक्चुअली जो एकर बापा जो दैत्यरी दास भी थिले से भी जने मुक्तियार थिले स्वांडो विलेज हला। आ सेही भले तांकर जने सांग थिले तांको बापांकर हला। तो तांको नाला रामचंद्र दास। तो तांको द्वारा से बहुत इंप्रेस थिले कि गोपबंधु दास। So he was a man of impeccable character. He means Ramachandra Das is a man of impeccable character and intense patriotism. So infused in him means
Gopabandhu Das a strong sense of dedication to public service. Under his influence, he was imbued with deep sense of patriotism. ହେଲା ତ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆମର ଗୋଟେ you can say initially ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଟାଇପ ର ଥିଲେ କାହାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ patriotism and like service to the human kind ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ influence କରିଥିଲେ during his studentship in school ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ କଣ ହାଇ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲେ କଲେରା ସେତେବେଳେ କଲେରା ଯୋଉଟା କି ହଇଜା କୁହାଯାଏ ବହୁତ କମନ ଥିଲା in India so cholera broke out during the car festival of Lord Jagannath ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା କଲେରା ବ୍ରୋକ ଆଉଟ୍ ହେଲା ତ ବହୁତ ଲୋକ କଣ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବିମାର ପଡିଲେ ତ ସେଇ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫର୍ମ କଲେ କଣ ପୁରୀ ସେବା ସମିତି this was his first experience in public service okay so this was done he came to focus in Utkala Deepika ଯେମିତି ଜାଣતો ତମର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରେ is the founder so it was the first newspaper in Odisha କେବେ ହେଇଥିଲା 1866 ରେ during the Nonko Darbika I had already discussed so to Nonko Darbika ଗୋଟେ video already ଅଛି ସେଟା ତମେ ଦେଖି ପାରିବ and first so he came to focus on Utkal Deepika କେବେ 1892 ରେ first as a student and then after 2 years he came to focus for criticizing the poet Radhanath Roy तो से Radhanath Roy को criticize करथले तो से पे भी ମଧ୍ୟ focus रे आस्थिले किए गोपबन्धु दास in the interesting context of Indradhanu Bijuli debate his first poem entitled Chandra was published in Utkala Sahitya in its May 1898 issue when he was still a high school student as he passed entrance examination conducted by Calcutta University तो Calcutta University द्वारा गोटे entrance exam थिला ताको पास करथिले और तांको द्वारा गोटे poem लिखाइला एटी Chandra then after Puri Jilla School then he came to college that is the Revensa College which was the first college in Odisha at that time 1866 रे बिल्ड ହେଇଥିଲା Revensa College এটা already ମୁଁ discuss करछि in the non-Kadurvika chapter video so Revensa College is सेथरे से admission लगे 1898 रे in first arts year हैला first arts class and it led to the expansion of literary and public activities till his death actually ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି ଏଠି east hostel ର Revensa College ଗୋଟେ east hostel ଅଛି ଆଉ west hostel ଅଛି हैला main campus ଥିଲା ସେଟା this is the old buildings I think 1921 ରେ ସେଇ building ଟା ଥିଲା but ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି plus 2 college ପଢିଲା ବେଳେ plus 2 science तो से ऊपर फर्स्ट फ्लोर रे गोटे बिल्डिंग गोटे रूम थिला जोटे की गोपबन्धु दास कर गोटे मूर्ति अछि से रूम रे रहउथले बिले रूम नंबर 46 I think that was I was staying in 49 so it was there okay so Revensa College east hostel से रहउथले तंकर एबे भी अछि आ सेठी हॉस्टल रो गोटे जो मैगजीन थिला जोटा की ईयरली मैगजीन था तार भी से एडिटर थिले ओके so एबे भी तंकर नाम अनुसार लाइक when ସେଇଟା publish होजी so he was the first editor of the East Hostel magazine also okay so that was thing now while at Revensa so 1898 से Revensa college रे आसिले Revensa रे से आसला परे कोन हला he initiated discussion group जहार नाम थिला कर्तव्य बोधिनी समिति that is duty awakening society कर्तव्य माने duty बोधिनी मतलब awakening समिति society तो इनिशियली जिला हाई स्कूल रे दिल्ली रे कोन करते सॉरी पुरी रे गोटे थिला तांकर जो पुरी सेवा समिति then in Revensa College he started कर्तव्य बोधिनी समिति तार काम कोन थिला here he and his friends used to assemble and ponder upon what social economic and political problems तो तांको सांगवान को सहित मिसई से कोन करथले social economic political problems ए टाइम रे जहा थिला ता विषय रे कोन करले डिस्कस करथले हैला तो ताना करला कर्तव्य बोधिनी समिति remember this कर्तव्य बोधिनी समिति और duty awakening society it was a time when separate statehood demand for Odisha was gaining momentum हैला तो separate statehood demand के स्टार्ट कर दिले सी टाइम रे तमरा मधुसूदन दास मधु बाबू उत्कल गौरव so Das also attended a meeting of the Utkal Sammelani Utkal Union Conference in 1903 तो उत्कल सम्मेलनी या पर भी ऑलरेडी गोटे मधुसूदन दास एंड उत्कल सम्मेलनी वीडियो बनी छी यू कैन आल्सो सी दैट ओके उत्कल सम्मेलनी रो जो ताको इंग्लिश को कहजा कोन उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस तार जो इनिशियल मीटिंग हेतला 1903 रे हला सेथरे भी द फाइल ही वाज अ स्टूडेंट he also attended initially he was disagreed with the proposal so he was disagreed with the Madhusudan Das initially proposal that Odia speaking areas should be merged with Bengal he strongly disagreed with the proposal that Odia speaking areas should be merged with Bengal presidency okay so let us there he strongly disagreed with the proposal that Odia speaking areas should be तो से चाहत लगी Odia speaking areas Bengal presidency तो merge की रहू
Okay, so he was supporting, but because Madhusudan Das was only ऊपर focus करथले ओडिया माने केमती ओडिया स्पीकिंग एरिया को मर्ज करा जाऊ आ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स चल रहा है ताको एते से फोकस करनथले तो तेणु इनिशियली देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट बिटवीन गोपबंधु दास एंड मधुसूदन दास. Then helping the flood victims, तो सेतल बन्या बात्या एबे जेमती होजी सेतल ओडिसा रे कॉमन थिला, and helping the flood victims, participating in other social works adversely impacted his studies. तो से जो ये सब काम करथले तो सेते कोन ला तांको स्टडीज रे बहुत इंपैक्ट हला, तेनु से इनिशियली तांकर जो डिग्री ग्रेजुएशन को फेल हेतले, but he passed the BA exam in his second attempt. So after graduation he went to where, to Calcutta University for law degree. So it next letter thimo maybe it is earlier Das went through a difficult time when his newborn son fell sick. तो जतले से टाइम रे कोन ला तांकर जो नुआ छुआ जन्म हेतला पुओ तो तांको कोसी को बीमार पड़ी गला, he was busy, but से टाइम रे फ्लड भी आसी गला, तेनु से कोन करले तांको पुओ पाखर न रहिकी केमती शेल्टर रिलीफ दिया जो केमती फ्लड विक्टिम मानको से परे दी से ध्यान देले हला. He preferred to stay with the flood victims and said, there are many people looking after my son, what difference can I make, but I can make a difference. Here is so many people crying for help. बुझ मो पोपा देखिया पे बहुत लोक होछंती किंतु एते जो लोक एठी बन्या बात्यारे कांदुछंती तांको की हेल्प करिवो. So it is my duty to go there and help them. Lord Jagannath will take care of the boy. So he said that Lord Jagannath will take care, but unfortunately his son died. Okay, although से रहितले भी बेसी किसी करि पार न थांते काहे कि सतरान जो मेडिकल फैसिलिटी एते डेवलप नथिला. So after that, further the day he got the news of his success, जतने हम कहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कोन करथले एलएलबी करथले, तो जेनु से जाना पड़ला कि तांकर लॉ एग्जामिनेशन से पास करले तांको वाइफ कर भी जन्म मृत्यु हे गला. So he lost his actually 3 sons and a wife, and he left with his 2 daughters only. तो से कोन करले तांकर बड़ भाई की तांकर जीवन को दायित्व देकी आ तांकर जहां थे प्रॉपर्टी ला ताकू दे देले, एंड से पूरा फुल टाइम कोन होले पॉलिटिक्स से जॉइन करि गले हला. While pursuing his LLB degree in Calcutta, तो जत कोलकाता रे भी से थिले LLB डिग्री करथले, he started a labor union and set up a night school for Odia laborers and cooks. He came in contact with the Bande Mataram group. सेटा हमर तमरा जेमती 1905 रे जानथियो स्वदेशी मूवमेंट चलथिला because of division of Bengal, which infused him with the Swadeshi spirit. His new mission was to reform society through improving the educational system. तो से जतले LLB करथले कोडी कलकत्ता रे फास्ट तो से लेबर यूनियन कले आ नाइट स्कूल कले कहा पई ओडिया लेबर एंड कुक पई, तापर से स्वदेशी स्पिरिट भी तांको मन रे जागृत हला. Then his new mission was to what, reform society through improving the educational system, जोटा कि हमें परे देखियो in the form of सत्यवादी वन विद्यालय. 1906 रे से लॉ डिग्री पास करथिले in Calcutta University. Then he entered into teaching in Nilagiri Garjat. So Nilagiri was a princely state, right? Garjat कहला समान को से टाइम रे Garjat hills को आ जाना से जो नॉर्थ ओडिसा वाला एरिया को नीलगिरी मयूरभंज एंड ऑल. सो नीलगिरी गर्जट से इनिशियली कोन कले टीचिंग कले एज ए हेडमास्टर इन ए न्यू स्कूल हला. तो नीलगिरी स्कूल रे से कोन करथले हेडमास्टर थिले. As early as 1907 he was engaged in the relief operation in Kendrapada रे भी relief operation थिले with the help of many college students, which was reported in Utkala Deepika in 1907. He was having unique personality, simplicity, sacrifice, tolerance, commitment. गोपबंधु started his career तो लॉयर जो लॉ डिग्री करथले इनिशियल तो से थिले कोडी तमरो हेडमास्टर थिले कोडी नीलगिरी रे, तापर किछ समय से लॉयर भी प्रैक्टिस करले कोडी पुरी रे. 1909 रे मधुसूदन दास ताको अपॉइंट करले कोथरे स्टेट प्लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ मयूरभंज. सो मयूरभंज वाज a very influential state, the largest princely state at that time in Odisha. Currently also Mayurbhanj is the largest district in area terms, right? Many minerals are there. So Madhusudan Das तांको स्टेट लीडर ऑफ द मयूरभंज करले. और जो श्री रामचंद्र भंज देथिले ही इज आल्सो फेमस लीडर, तांको ऊपर गोटे वीडियो बनेवा हला. तो सीए सेतले किंग थिले श्री रामचंद्र भंज दे, जहां को नाम अनुसार कोन हिची एसबी मेडिकल कॉलेज इन कटक हला. तो मधुसूदन दास कोन करले गोपबंधु दास को 1909 रे मयूरभंज राज्य पई और प्रिंसी स्टेट कैन से सेठी तांको स्टेट लीडर रखले हला. बट से किस समय पर सेठी रिजाइन करले क्योंकि काहेकि ना तांकर स्वदेश स्पिरिट जागृत हेतला एंड से गोटे कोन एजुकेशन माध्यम रे चेंज करियो चाहले सोसाइटी को. तो से पय से कोन करले सत्यवादी वन विद्यालय स्थापित करले के 1909 रे हला. सत्यवादी वन विद्यालय, सत्यवादी वन विद्यालय की एस्टैब्लिश होले ताले गोपबंधु दास केबे 1909 रे. तो गोपबंधु दास ताको कहतले आल्सो यूनिवर्सल एजुकेशन लीग. इट वाज कॉल्ड द यूनिवर्सल एजुकेशन लीग बाय
Gopabandhu Das, and inspired by the Deccan Education Society. तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इंस्पायर है कि से कोन कले सत्यवादी वन विद्यालय एस्टाब्लिश कले हला जहा को से आ गोटे तार गोटे ना कोन से कहउतले यूनिवर्सल एजुकेशन लीग. So it was operated in the Gurukula tradition and aimed to impart liberal education on a non-sectarian basis. तो गुरुकुल ट्रेडिशन थिला किंतु लिबरल एजुकेशन देउतले. गुरुकुल सिस्टम रे एजुकेशन होउतला किंतु लिबरल एजुकेशन. ओके, तो एको भी ब्राह्मण माने किछि अपोज करथले, बट ही कंटिन्यूड. टीचिंग वाज इम्पार्टेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज. तो गछर छाई तळे सेडी बहुत बर गछ थिला. एक्चुअली इट वाज जस्ट बिहाइंड द साक्षी गोपाल टेंपल. ओके, तो तारी पछरे साक्षी गोपाल जगह रे ही सत्यवादी वन विद्यालय एबे भी अछि. स्कूल टा हाई स्कूल एबे ना. सो इट वाज देयर साक्षी गोपाल हाई स्कूल आई थिंक. सत्यवादी वन विद्यालय तर केबे एस्टाब्लिश होला 1909 रे. हां, सो से तमरो मयूरभंज जो थिले कोन स्टेट क्लियर ताकू छाडला परे एको एस्टाब्लिश कले. The students were taught with the values of what? Secularism, as I said, non-sectarian education. से टाइम में secularism, nationalism and idealism एगुडा विषय रे ऐसी यार वैल्यू को स्टडी माने टीचिंग करा गला. But it is also special mention that the dignity of labor became the principle of life. Dignity of labor became the principle of life. तो ये एक्चुअली गांधीयन फॉलोअर थिले हला. ऑलमोस्ट बिफोर गांधी केम आल्सो ही वाज काइंड ऑफ गांधी को माने पद चिन्ह नहीं चलतले बिफोर गांधी आल्सो. Later on also he became a follower. So he was stressing on the dignity of labor become the principle of life both for the students and teachers. He believed education is necessary if people were to become aware of their people were to become aware of their both of their innate freedom and their duty to their country. तांकर innate freedom पाई and तांकर देश पाई कोन ड्यूटी अछि ता पाई जानिया भेले कोन हो. Education is very much important. So it is education is always important nowadays also that time also हैला. So current society रे जा प्रॉब्लम्स अछि ताकू केमती ताकू बुझी सॉल्व करिया पाई कोन तो ता पाई सब सिटीजन मान को कोन एजुकेशन इज इंपोर्टेंट. So that Deccan Education League, sorry, Deccan Education Society विषयटे पढ़ दवा जहा द्वारा इन्फ्लुएंस है कि सत्यवादी वन विद्यालय से एस्टाब्लिश करथिले. तो एक्चुअली डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टाब्लिश हेतला 1884 रे हला. के करथिले को इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल लाइक गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान्य तिलक. सो लोकमान्य तिलक जे थिले ना बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक तांको आछे. तो सी एस्टाब्लिश करथिले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1884 रे. बट जतल तांको लेटर ऑन तांको जेल हेतला ना मांडले रे से थिले फॉर आई थिंक 6 इयर्स और समथिंग. So they time रे सेटल के लीड करथिले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले. तो जतल गोपाल कृष्ण गोखले एंड धोंडो केशव कारवे ए दी जण जतल ताको लीड करथिले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को सेटल बहुत फेमस चलथिला सेटा हैला. तो ता ऊपर ता सेथरे प्रभावित है कि कोन कले गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय स्टार्ट कले हैला. ओके, दिस वाज डन. So Deccan Education Society was established by whom? अगर पचारे जीवो गोपाल गणेश अगरकर, लोकमान्य तिलक. I think another person was there, some Chiplun or something. I have to say that. And so mainly Tilak you can remember. Okay. Baki kintu Gopal Krishna Gokhale भी associate थे, although he was not the founder later on. And Kesav Karve जाको महर्षि कार्वे को आजे तांको भारत रत्न मिलथिला 1958 रे हला. honored with Bharat Ratna. So he was also associated with the Deccan Education Society. The open air school made laudable experiments in diversified curriculum, community approach in living and learning and social service. तो जो गोपबंधु दास स्टार्ट करले ओपन एयर स्कूल एटा कोन गला बहुत भलो एक्सपेरिमेंट थिला जो थई कोन थिला डाइवर्सिफाइड करिकुलम थिला, कम्युनिटी अप्रोच थिला इन लिविंग एंड लर्निंग एंड सोशल सर्विस. So the students they are used to stay together, they live together, study together and dine together. Hela, so study, live and dine together. That means खाइबा. So these innovations were subsequently tried out by John Dewey in America. So later on John Dewey भी अमेरिका रे implement करथिले and were popularized throughout the world. Yeah. So it was started initially by whom Gopabandhu Das. So the माने गुरुकुल style atmosphere थिला, but education was liberal and the non-sectarian. Okay, so this is there. Gopabandhu Das कोन कले सत्यवादी वन विद्यालय को चढ़ाया पे गोटे फंड भी करथिले डीआरई हला. फंड नाला कोन द ओडिशा एजुकेशन फंड जहार ट्रेजरर थिले मिस्टर लाबर्ट. ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्सा कॉलेज. ही वाज द ट्रेजरर. सो ओडिशा एजुकेशन फंड नाम गोटे फंड तैयार करथिले. एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ सीनेट एंड सिंडिकेट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी आल्सो हला. पटना यूनिवर्सिटी व्हाई बिकॉज़ जेंति जानथि 1905 रे तमर फर्स्ट बंगाल डिवीजन हितला. पुनी 1911 जेता रिवर्स हैला तो कोन हैला बंगाल टू ओडिशा एंड बिहार सेपरेट हो गले 1911 रे. तो सेतले से कोन हैला
पटना यूनिवर्सिटी अंडर रे आसी गला सत्यवादी वन विद्यालय प्रीवियसली एटा थिला कलकत्ता यूनिवर्सिटी अंडर रे सो दैट टाइम रे गोपबंधु दास कहले गोटे मेंबर हेले सीनेट सिंडिकेट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी रो हिज मॉडल ऑफ एजुकेशन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल्स ऑफ बोथ वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन एंड इंडियन मॉडल ऑफ एजुकेशन सो मिक्स काइंड ऑफ थिंग जेमति कि तमरो इवन आर्य समाज रो फाउंडर केतले आंग्लो सॉरी दयानंद सरस्वती डीएवी स्कूल जो सेटा भी एटा बहिथिला the teachers he selected for his school were a team of devoted workers with high intellectual caliber जो टीचर माने थिले से स्कूल रे से माने हाई इंटेलेक्चुअल कैलिबर थिला एज वेल एज स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन पैट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस तो इंटेलेक्चुअल कैलिबर से तो कोन थिला ता डेडिकेशन पैट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ इट इज आल्सो फॉर द टीचर्स हला एमंग देम फेमस आर बिग फाइव जाको पंचसखा कहा जाय पंचसखा ऑफ द मॉडर्न ओडिशा दैट इज गोपबंधु दास नीलकंठ दास आचार्य हरिहर दास गोदावरी मिश्र एंड कृपासिंधु मिश्र है ना तो गोपबंधु दास नीलकंठ दास आचार्य हरिहर दास गोदावरी मिश्र एंड कृपासिंधु मिश्र सो ताको कहला कोन पंचसखा ऑफ द मॉडर्न ओडिशा है ना मेडिवल ओडिशा भी अलगा पंचसखा थिले जे माने लिटरेचर लिखिथिले सब है ना बलराम दास जगन्नाथ दास राइट अनंत दास अच्युत दास एंड another one is there I'm forgetting that name. So it secured affiliation from Calcutta University and held its first matriculation exam in 1914. So the Satyavadi Vana Vidyalaya secured affiliation from Calcutta University, as I said, because 1909 started like Bengal under thila, and matriculation exam ke thila 1914 initially. And later on, when it was separated from Bengal, Odisha and Bihar, so Patna University under Achigala eta 1917, and it became a national school in 1921. And but later on what happened due to financial problems and ultimately was closed in 1926. Okay, school faced financial problems later on. Now during this period only Satyavadi and the Samaj did a famous magazine, a famous newspaper. Nowadays also it is going on, daily newspaper. So it was started during this period only. So Gopabandhu was a pioneer of Odia journalism. Journalism day के मैं कोई celebration of Odisha रे, that is 4th August. जोड़ा कि जो नहीं कि कौन है 1866 से उत्कल दीपिका स्टार्ट हुई फर्स्ट ओडिया न्यूज पेपर सो गोपबंधु वाज अ पायनियर ऑफ ओडिया जर्नलिज्म मेड इट सुटेबल फॉर द कॉमन मैन ही पब्लिश्ड अ मंथली मैगजीन कॉल्ड सत्यवादी इन 1914 तो इनिशियली से मैगजीन स्टार्ट करले ता ना थिला कोन सत्यवादी काहे से स्टार्ट करले सत्यवादी वन विद्यालय रु तो ना कोन करले सत्यवादी हैला ही इनिशियली बिकेम अ पार्ट ऑफ बरहमपुर बेस्ड डेली न्यूज़पेपर बरहमपुर से गोटे न्यूज़पेपर असला डेली न्यूज़पेपर दैट इज आशा सेतरे से इनिशियली एडिटर थिले बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड he found his job to be too constraining मतलब सेठी कोन थिला बहुत छोटो पेर जो न्यूज़पेपर थिला एंड बेसिकली लिखि होनथला तनु से कोन करले निजर गोटे न्यूज़ स्टार्ट करले के 4th अक्टोबर 1919 रे तो 1919 से स्टार्ट करथले एबे केते 102 वर्ष ऑलमोस्ट पूर्ण हो गेलानी ही स्टार्टेड द न्यूज़ वीकली न्यूज़पेपर सेटल वीकली स्टार्ट करथले इनिशियली तो ना कोन करले द समाज हैला which went on to become the most popular newspaper of Odisha. Till now also it is the most important or famous newspaper in Odia language in Odisha. तो इनिशियली 1990 टा वीकली थिला दिल्ली के बेहला 1927 रे उत्कलमणि's poems and novels were marked by nationalistic fervor encouraging the youth to serve national integration तो जेतल से हजारीबाग जेल रे थिले ड्यूरिंग दिस what non cooperation movement 1922 1924 रे just after that but actually I think yes कनिका रे गोटे हितला विद्रोह तो से बेसिस रे ताकु जेल हितला हजारीबाग जेल सो से टाइम रे त 2 वर्ष से जेल रे थिले से गोटे नोवेल लिखले दैट इज बंदीर आत्मकथा ହେଲା बंदीर आत्मकथा जोड़ा कि इंग्लिश कौन बायोग्राफी ऑफ ए प्रिजनर एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा तो बंदीर आत्मकथा के लिखले गोपबंधु दास बेटो 1922-24 सेइथरे जो एई गीतडा आस्तला मिसु मोर देह एदेश माटी रे देशवासी जाली जान तो पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जते गड मिसु ताही पड़ी मोर वंश हर so let my body mingle in the dust of my motherland and let my countrymen walk across it and let my flesh and bones fill in the potholes of my country's self independence ना तो स्वराज्य पत्र जहाँ भी अच्छी कौन गाढ़ा माने किसी भी प्रॉब्लम अच्छी पोर्टल्स सेटा सेतरे मोर कौन मांस हाड़ पड़ी की जंदी ताकू ये जाओ बुझी जाओ है ना so this is what is written in the what is novel बंदीर आत्मकथा है ना there is another book बंदी जीवन so that is different okay this is बंदीर आत्मकथा Utkalamani Gopabandhu's political career. As regards its political career, Gopabandhu was a member of old Bihar and Odisha legislative council. So जेमति कि बिहार एंड ओडिशा सेपरेट हेइतले 1911 रे तो तार से मेंबर गोटे थिले हला मधुसूदन दास तांको कहतले माने तांको he told him to become a member
and he became a member during 1917 to 1920, just before the non-cooperation movement. He emphasized on four major problems. That is, तो जो 1917 जब इतिहास कहाँ बेसिस है 1909 रे जो असला पार्लियामेंट रिफॉर्म्स ता बेसिस है ना कि क्योंकि परडा असला 1919 रे जो मॉन्टैग चेंज सोर्स राइट सो ही emphasized on four problems तो जो टाइम रे से कौन थे लेजिस्लेटिव मेंबर काउंसिल रे मेंबर थे बिहार एंड ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल रो so he emphasized on four major problems. That is, first is amalgamation of all the Odia speaking tracts, permanent measures for the prevention of floods and famines in Odisha, the restoration of Odia's right to manufacture salt free from the excise duty, and spread of education in Satyavadi model. So first of all, Odia speaking tracts को केमती एका माने amalgamate करा जो और merge करा जो. Then flood and famine को केमती permanently prevention करा जो. अभी भी season सही चलची. Yes, Bhatya Parai, like this Navin Patnaik, our chief minister is saying that we should focus on permanent solution because every year at least once or twice this cyclone comes to Odisha coast, right? So the restoration of Odia's right to manufacture salt free of tax and spread of education on Satyavadi model. Okay, this is the four things he was highlighting. Gopabandhu regularly attended and participated in the annual meeting of the Utkala Sammelani, Utkala Union Conference, Utkala Sammelani, which already video one is founder thile our Madhusudan Das, right? So he was elected as its president in 1990. Only se president hitle Utkala Sammelani, Utkala Union Conference. He gave a broader definition of Odia, that is any well-wisher of Odisha is in Odia. केही भी यदि ओडिसा रो well-wisher से गोटे ओडिया ए ओडिया से definition दिले. His resolution to accept the aims and objects of the INC or Indian National Congress is the part of Utkal Sammelani approved at Chakradharpur session in 1920-21. तो INC रो जो गोल को उत्कल सम्मेलन रो गोल सहित मर्ज करिया पई से चेष्टा करथिले. That is happened in Chakradharpur session during the just this non-cooperation movement. Gopabandhu was the first leader of Odisha to organize the Odisha Provincial Committee, जो Congress Odisha Provincial Committee. Although that time Odisha was not a separate province, but Odisha Provincial Committee गोटे हेतला Congress रो. Hello. So this Gopabandhu Das is able to convince INC that Odia speaking people's जो area अच्छी सेटा सेटा मर्ज हवा दरकार जोटा कि इनिशियली कांग्रेस रिजेक्ट कर देथिला जोति पई कि कोन मधुसूदन दास एंड INC like separate ही हेतले. But Gopabandhu Das was able to merge the goals of INC as well as Utkala Sammelani. Okay, so he became the first president of Congress Party in Odisha and brought Gandhiji to Odisha in 1921, 23rd March. So first time by Gandhiji 23rd March 1921 रे आस्थिले Odisha कटक तो कटक बरहमपुर भद्रक ए सब जगह पूरी जाइतले से हैला. ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाइम रे कोन उत्कलमणि गोपबंधु दास कर कंट्रीब्यूशन थिला ऑलरेडी जो अछि हम गोटे वीडियो रे डिस्कस कर साची नेशनल मूवमेंट्स इन ओडिशा. Just I will again discuss it so that tomorrow revise it. So three important events like non-cooperation movement पूर्व कौन event इतला. Three important event ला Rowlatt Act आस्थिला, खिलाफत movement इतला, then Jallianwala massacre. तो ये तीनटा जाकर जोगु तमर कोन हला non-cooperation movement start हला. खिलाफत movement ता सहित merge करी गला हला. तो non-cooperation movement इतला 1920 right. So occurred just after the end of World War I, which prompted the Indian nationalists to act against the British. तो ये टाइम रे तमर गांधीजी मेन लीडरशिप को आ जाइतले नेशनलिस्ट लीडर्स हला. तो द anarchical revolutionary crimes act of 1919 जोडा कि कहै छै Rowlatt Act, anarchical and revolutionary crimes act हला. Rowlatt Act भी कहै छै ताकू were passed to suppress the freedom of Indians. So just after the this World War I तो सेमान कोन कले लाइक जो carrot and stick method रे carrot कोन देले सेमाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोडा कि तमर मॉन्टैग चेंज रिफॉर्म एंड stick कोन देले दिस Rowlatt Act हला. तो एते कोन हला कि तमरो जदी बिना किछि कारण माने बिना व्हाट इज दैट कॉल्ड माने तुमको कोर्ट सामने रे न जाय कि तुमको कोन करबे 1 ईयर और 2 ईयर पर्यंत कोन करबे तुमको रखि परिबे ये करबे जेल रखि परिबे राइट. सो दैट वाज द Rowlatt Act. जंती के बे तमरो अछि जो टाडा का थिला जो आगु बता नाही हला. Protesting against the Jallianwala Bagh massacre and Khilafat movement, the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi decided in its special session held at Calcutta 5th September 1920 हला जे कि डिसाइड करथे कि लाला लजपत राय. तो 1920 दुईटा सेशन हेतला. इनिशियली 1920 रे गोटे स्पेशल सेशन हेतला, बाकी नॉर्मल सेशन तो तमर होय डिसेंबर रे हला जोडाई. सो सेट जो इनिशियली हेतला कलकत्ता रे सेटा को के डिसाइड करले लाला लजपत राय. सो सेठी कोन हला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होबा पई महात्मा गांधी प्रपोज कले. Gopabandhu Das attended this special session and returned from it being imbued with staunch nationalist ideas.
Although Madhusudan Das had associated himself with the Congress in the early phase, subsequently he kept himself aloof from it, being unable to get support from Congress leaders for the merger of Odia tracts, Odia speaking tracts. So he kept himself preoccupied with the Odia movement. Se Utkal Samani वगैरह start करथिले. So subsequently in 1921 Gandhi started the non-corruption. There was practically no Congress organization working in Odisha. Okay, and also discuss Korsal. So at the clarion call of Gandhi in 1920, Gopabandhu Das virtually started once again the Congress movement. तापर जतले कलकत्ता सेशन पर नागपुर सेशन हैला आईएनसी रो केबे डिसेंबर 1920 जहाको डिसाइड करले के सी विजय राघवाचार्य जे की फाउंडर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर आल्सो सो व्हिच फाइनली पास द नॉन कॉर्पोरेशन रेजोल्यूशन तो नॉन कॉर्पोरेशन 1920 डिसेंबर रे पास हेतला तार के प्रेसिडेंट करले ताको विजय राघवाचार्य so it was attended by a number of delegates from Odisha like Pandit Gopabandhu Das, Bhagirathi Mahapatra, Jagabandhu Singh, Jadumani Mangaraj, Mukunda Prasad Das, Niranjan Patnaik, Hare Krishna Mahatab. तापर से जस्ट नागपुर सेशन पर कोन हला सो इथरे कोन हला द सेशन ऑफ द कांग्रेस डिसाइड टू फॉर्म provincial congress committees on linguistic basis. So as a result a separate provincial congress committee was formed for Odisha even though Odisha was not a separate province at that time. तो ता माने कोन तो ओडिसा को ଗୋଟେ separate province पे सपोर्ट करले कि कांग्रेस सपोर्ट कला. So soon after the Nagpur session Utkal Sammalani that is the Utkal Union Conference was held at Chakradharpur जहार प्रेसिडेंट सेतल के थे जगबंधु सिंह. So Jagabandhu Singh is a very good friend of this Gopabandhu Das, Utkalamani Gopabandhu Das. In this conference Gopabandhu Das suggested a modification in the outlook of the Utkal Union Conference. तो जो चक्रधरपुर सेशन के केबे हला 1920-21 रे just December 30-31 1920 1st January 31 1921 तो एथे गोपबंधु दास सजेस्टेड करले कि उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस आउटलुक रे मॉडिफिकेशन करा जाऊ so जोडे कि ऑलरेडी डिस्कस कर सारछि. So he held that though the merger of all Odia speaking areas हैला though the merger of all Odia speaking areas was a vital issue for Odia yet Odisha should not remain aloof from the mainstream national consciousness represented by the Congress, Indian National Congress. So Gopabandhu Das proposed what the aims and objects of the Indian National Congress be accepted as those of the Utkal Union Conference or Utkal Sammalani in addition to the accepted objectives of the conference. So this was passed by the conference even though quite a number of people including the president of the conference abstained from voting on it as a mark of dissent. And Madhusudan Das did not attend this meeting. तो Madhusudan Das because तांकर आइडियोलॉजी के चेंज थिला गोपबंधु दास को सहित because तो सही पैसे कोन गले एटा को अटेंड करन थिले हैला. सो के को लीड करथले प्रेसिडेंट करथले दिस इज प्रेसिडेंटेड बाय जगबंधु सिंह. Okay. Then on his return from Chakradharpur, Gopabandhu held a meeting, public meeting in Cuttack on 24 January 1921 and exhorted the students to join non-corruption movement. तो just after around 20 days 24 January रे कोन कले गोपबंधु गोटे पब्लिक मीटिंग कले कटक रे और स्टूडेंट्स मान को आह्वान कले जॉइन करे पय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. महात्मा गांधी came to Odisha between 23rd to 29th March 1981. तो सेटा में महात्मा गांधी पूरा देश भ्रमण करथले. फर्स्ट टाइम पे मिसी केबे आसले गोपबंधु दास को डाकिले 23rd March to 29th March पर्यंत रहिले. In his address to the people at Cuttack, Puri, Bhadrak, Berhampur, he appealed to them to join the non-cooperation movement. The Utkal Provincial Congress Committee consists of Gopabandhu as president. The first president of Utkal Provincial Congress Committee was Gopabandhu Das. Ekram Rasool as vice president, Bhagirathi Mahapatra as secretary, Brajabandhu Das as joint secretary. Utkal Provincial Congress Committee deputed the following 12 members. 12 জন member thile Utkal Provincial Congress Committee tarafru to represent Odisha in the All India Congress Committee like Gopabandhu Das, Jagabandhu Singh, Nilakanta Das, Gopabandhu Chaudhary, Niranjan Patnaik, Hare Krishna Mahatab, Bhagirathi Mahapatra, Dharanidhar Mishra, Banaprastha, Nilakanta Das Chaudhary, Atal Bihari Acharya, Brajamohan Panda, Jamini Kanta Viswas. So all these are there. Now, finally, after this non-corruption movement, so during non-corruption as I discussed already, 1920 जो हिटलर सेशन जहार की कलकत्ता सेशन जो थिला सितंबर रे तार प्रेसिडेंट के करथले लाला लजपत राय. तो लाला लजपत राय गोटे सोसाइटी फाउंड करथले दैट इज लोक सेवा मंडल हैला. लोक सेवा मंडल नाम को गोटे से स्टार्ट करथले गोटे एनजीओ जहा कहउची सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी हैला. सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी. देयर इज अनदर सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया आई थिंक सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी दैट इज बाय गोपाल कृष्ण गोखले. दिस सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी. ओके. सो लाला लजपत राय को फाउंड करथले. तो लाला लजपत राय बहुत इंसिस्ट कले गोपबंधु दास को टू जॉइन दिस थिंग which was a charitable trust working for the betterment of the downtrodden people. So this was also Gopabandhu Das भी इतने इंटरेस्ट थे तो ताको ये जॉइन कले किए गोपबंधु दास also.
ताको इंग्लिश रे कहा जाउची सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी एंड हिंदी रे कहा जाउची लोक सेवा मंडल लोक सेवक मंडल. He became the vice president of the servants of the people society in 1927. तो गोपबंधु दास vice president इतले यार केबे 1927 रे. Then he laid stress on the language as the foundation of unity. तो language जे गोटे foundation of unity among within diversity. तो सेटा जो इंडिया रो अछि. तो later on also linguistic basis state इतला. तो जदि पचारियो linguistic basis first state कोटा ओडिशा, but after independence it was Andhra. होला after independence जदि पचारियो linguistic basis first state, that is Andhra. But during British system or British India, Odisha or you can say Utkal province was the first linguistic province. Okay, oneness of language makes the unity stronger. To him, language is the root of thought and civilization. Okay. तो जतले से लोक सेवक मंडल और सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी रो वाइस प्रेसिडेंट थिले. तो लाहौर रे से थिले सेतले लाहौर रे कोन करथले से ओडिसा रो जो बन्या प्रपीड़ित लोकन पई फंड रेज करथले. से टाइम रे कोन हला तांको टाइफॉइड हे गला हैला. देन he left his body on 17th June 1928. So for a short period of time he stayed in Odisha, in mainstream policy, like you can say 1898 to 1928, almost 30 years. But this period was very like important years. So Madhusudan Das, as you can say, is a moderate leader, and Gopabandhu Das he's a Gandhi of Odisha, you can say, Gandhivadi. So the death of Gopabandhu Das gave a serious jolt to the Congress organization in Odisha. It created a crisis of leadership. So although both young leaders like Hare Krishna Mahata, Raja Krishna Bose, Nilakanta Das, Bhagirathi Mahapatra, but semanakara jo stature thila ete high no thila like Gopabandhu Das. So that's why you can say Subhash Chandra Bose rightly called him the father of the national movement in Odisha, because जो ओडिशा रो जो इनिशियली जो उत्कल सम्मेलनी वाज द मेन थिला जो कि ओडिया जो स्पीकिंग ट्राइब को इकट्ठा करिया पई मेन टारगेट थिला. बट ताकु ता सहित जो मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स को नेशनल मूवमेंट को मर्ज करथिले कि गोपबंधु दास. सो गोपबंधु दास को से पे उत्कलमणि भी कहा जाउची, जहा को के पीसी रे दैथिले, प्रफुल्ल चंद्र रे तांको टाइटल दैथिले. सुभाष चंद्र बोस तांको टाइटल देले फादर ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन ओडिशा. सो वेरी वेल सुटेड नेम टाइटल, फादर ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन ओडिशा, यू कैन से who Utkalamani Gopabandhu Das or Gandhi of Odisha also you can say, right? So this is like mo bahut article ru kon kali taku concise karke ethre lekhi chi. I hope it will be helpful to all of you. Please put in comment section your valuable feedback. Okay, it may be positive, negative, doesn't matter. Okay, whatever I'm reading for my own also I am trying to give it to you here. Okay, I hope it will benefit all of you. And also you can join this Telegram channel for notification. And thank you so much. Hare Krishna, Jai Jagannath.